we did. We did take the permission from his parents. And answering your second question, yes, it is not. It's a piece of work. It's a piece of work where there is a bit of fiction, but I can tell you one thing: it's honestly meant. The fiction is also honestly meant. I mean, we have put together certain areas of his life, because 31-year-old man's life, putting in 2.5 hours, it's not that easy. So we put certain things together in a very honest way. Yeah. Sir, Runa from Web Duniya. First of all, I'm looking forward for this film. मुझे बहुत अच्छी लग रही है देखने में. So congrats. साथ ही ये जानना चाहूँगी वो 7 बिहार रेजिमेंट से थे और साथ ही एनडीए से खड़गवासला से निकलकर आए हैं, वहाँ के पढ़े हुए हैं. सर्टनली बहुत सारे उस्ताद होते हैं, बहुत सारे वर्दीधारी होते हैं. किन किन को दिखाई है? क्या आर्मी से आपको अलग से कोई स्पेशल हेल्प मिली है? Yeah, I think we spoke to the superiors जो उनके कर्नल वगैरह थे, मतलब 7 बिहार में उस टाइम. We also spoke to the commandos that he was a training officer of the National Security Guard. So I think there was a lot of support and a lot of interest in our film from the day it was announced. Especially in the south of India, where we are very well known. There's a lot of interest from Bangalore and Hyderabad and Kerala, of course, his home state. What we realized is that we didn't expect the level of happiness that people in the service would show to us. हमने ये सोचा कि यार सब कड़क होते हैं, सब एकदम तगड़ा होते हैं, मतलब बहुत सीरियस होते हैं. वो तो खुशी में गले लगा रहे थे, हमें दिखा रहे थे कि वेपन्स ऐसे होते हैं, ऐसे शूट करो. Even last 26/7 when we did that tribute to Major Sandeep at the Taj, Sony thankfully organized a trip to the NSG Powai campus, or the NSG officers they were testing my shooting skills और मेरे साथ celebrate कर रहे थे, you know. So I think I clearly understood this beautiful sense of brotherhood. और इस पूरे देश के brotherhood में ना जो defense forces हैं, whether it's the Navy in Vizag, whether it's the National Security Guard in Manesar, 7 Bihar Regiment, Bangalore officers, ये सब मिलके हमें फोन करके पूछ रहे हैं, यार we're so happy with what you did with the trailer. We're going to be there June 1st और June 3rd, first day first show. Lovely. त्रिकोणीय क्लैश होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर, क्या एक्सपेक्टेशंस है और इस क्लैश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think practically बात किया जाए तो we are the biggest film in Telugu. Vikram is the biggest film in Tamil and Prithviraj is the biggest film in Hindi. But while there are big fish in the sea, we are the goldfish. एक छोटा सा और सवाल, अदिति, रवि सर, मैं आऊँ वापस. You know, I think disappointment तो है, but I think we were more concerned about the human cost, especially in the second wave. मैं तो movie को continue करने के mind space में नहीं था for a couple of months. You know, we were looking out for a lot of people. I was busy organizing hospital beds for a lot of people in different cities. So I think the disappointment was there, but हमें हमेशा ये पता था कि the moment we come, it will change the world. गर्व तो बहुत महसूस करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक ऐसी मूवी का हिस्सा बन पाऊँ. और आई थिंक चैलेंजिंग जो पार्ट था वो इन दोनों ने मुझसे करवा लिया और संभाल लिया. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. और आई थिंक मैं नॉर्मली इन रियल लाइफ बहुत carefree, bubbly हूँ. So on sets, sometimes I used to think, you know, is this the right atmosphere to say this or do this? And they just made it so comfortable. So thank you guys so much. मेरा वही दूसरा सवाल अदिति जी से था कि मेजर संदीप का रोल निभाना एक चैलेंजिंग के साथ बहुत गंभीर किस्म का था. और पर्सनली आप बहुत जोक मारने वाले हैं, ऐसा उन्होंने भी बता दिया अभी थोड़ी देर पहले. तो जब ये किरदार आपको निभाना था तो मतलब क्या फीलिंग थी आपके अंदर कि एक ऐसे इंसान का किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी? आई थिंक ये भी शायद मेजर संदीप की वजह से ही हुआ, बिकॉज इन रियल लाइफ वो बहुत ही हैप्पी, वेरी फन, बहुत ब्राइट स्माइल के साथ, दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन ही इज. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के फैन है वो. लव्ड एक्शन फिल्म्स, दोस्तों उनको सैंडी बुलाते हैं.
he's this super soldier जो एकदम fun loving थे. So I think that change happened to me क्योंकि मैं actually बाहर थोड़ा reserved हूँ. So playing Major Sandeep I think changed me like that. I think ये था कि जब हमने पहली बार अंकल और आंटी को फोन किया, अंकल और अम्मा को, अंकल हंग अप ऑन मी. दूसरी बार फोन किया फिर से हैंग अप कर दिया. थर्ड टाइम हमने क्या किया, वी पिक्ड अ गर्ल इन आवर टीम एंड हैड हर कॉल ताकि शायद अंकल थोड़ा सॉफ्टली बात करें हमसे, एंड थैंकफुली डिडंट हैंग अप. तो ये सब के बीच में हमने वी स्टार्टेड मीटिंग देम. 7 मीटिंग्स के बाद अंकल ने एक दिन मुझसे कहा, ही सेड आई बिलीव कि आप मेरे बेटे के ऊपर फिल्म बनाएंगे 10%. तो मैंने पूछा क्यों? अंकल ने कहा यार बॉम्बे से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स फोन करते हैं, मलयालम से फोन करते हैं क्योंकि हम हैं केरलाइट्स, और ये सब लोग हमें फोन करके बोलते हैं कि वी वांट टू मेक अ मूवी ऑन आवर सन्स लाइफ, बट दे आर सेइंग इट लाइक दे आर डूइंग अस अ फेवर. ये पहली बार है कि समवन इज लुकिंग एट अस विद द सेम फीलिंग वी हैव. So I think making this film was an absolutely emotional experience from day one. पर इमोशनल का मतलब ये नहीं है रोना धोना. इमोशनल का मतलब ये है कि सारे इमोशंस फील करना. लाइक 31 साल की जिंदगी में क्या क्या फील करते हैं? You have anger, you have happiness, you have love, romance, sadness, courage, and this beautiful life of this beautiful man we try to encapsulate. And honestly, यार 2 घंटे काफी नहीं है, but that is the limitation of a film, man. Brevity is an art. ये क्या होता है कि यूजुअली जब बायोपिक्स कर रहे हैं ना लोग इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं. हमारा ये चैलेंज था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें थे, एंड वी हैड टू रिमूव अ लॉट. यार लोग नहीं मानेंगे कि ये उन्होंने ये भी किया है. So we had to kind of bring that brevity as far as keeping it believable. But the truth is, this is an absolutely unbelievable man. All of us have certain instances that are a little grave to kind of address at something like this. I did hear of a story, but I wish not to kind of like put it out here. It was a little sad, but thankfully nothing happened to my near and dear ones. But yeah, that's about it. I think हमारे लिए बहुत important था कि हम ये दिखाएं कि एक आर्मी मैन के पीछे ना there is innocence, there is nostalgia, there is purity. हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार आर्मी वाले मतलब direct, they're born ready to go fight at the border, but that's the stereotype. No, it comes from a beautiful childhood. They have the same feelings we do. So I think it was important for us to show that Major Sandeep was the boy next door who did something extraordinary. It was important for us to show कि वो भी हम सबकी तरह mom and dad, दोस्त, स्कूल के क्रश, फेयरवेल डांस, ये सब में बहुत खुश थे वो. एंड ही वाज इट वाज अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम जब दिखा रहे हैं ना कि ये इनकी ज़िंदगी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो व्हाट दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स आर. इवन इफ यू नोटिस इन द ट्रेलर, फर्स्ट 30-40 सेकेंड्स में हमें धीरे धीरे हो रहा है. द ट्रेलर इज गोइंग वेरी स्लो. वो इसलिए क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे थे कि द फर्स्ट 30-40 मिनट्स ऑफ द फिल्म बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, एंड देन बाद में पता चलता है जब वो जो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं, you start understanding how each of those simple things influences the extraordinary things he did later in life. सही, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Talking about the song, I loved it. I think growing up, my biggest jam was Kabhi Kabhi Aditi. And growing up as an aspiring actor, I always saw, one day I want a song with my character name in it, and I got it, and I'm very excited about it. Here's a question. सही on your left, hi to your friend. सही जी, अदवी जी हमारे मुंबई आए हैं, तो कुछ मराठी सिखाई आपने उन्हें, या कुछ उन्होंने सीखने की? वो सीखना चाहते हैं क्या, पूछो उनको. सर आप सिखाइए, हम बोलेंगे अभी. कुछ बताइए मराठी में. सर 1-2 लाइन बोलिए, हम तो बोलना चाहेंगे आपके साथ. We have done a lot of research about the attacks, because Major Sandeep's participation in the attacks was very active. So we did a deep research into it, and that required a lot of recreation, because
it happened some 13 years back. So we did a lot of sets, we did a lot of CGI and action. What happened in reality is repeated, but this is more edgy. Adivi, my question is to Adivi. Adivi, to your friend. Hi, this is Akshay from INS. You're a good friend with Vijay Devarkonda and Naveen Polishetty. You have worked with Naveen in his first film, Agent Inside Srinivas Athreya. I want to know what was their reaction when they saw this wonderful trailer and, of course, the song that's about to come up next. I think, you know, I think we're all part of that sort of new wave of South India. I'm known for my action thrillers, Vijay is known for his romantic films, Naveen is known for his comedy. So I think in that sense we're just happy to support each other. Naveen se to baat nahi hui, but I'm so glad Vijay, you know, shared our trailer, shared our teaser. I just think we're just happy we're doing good work and we're all happy कि यार अब all India देख रहा है हमारे work को. यार I think हम ये सोचते हैं कि हम Indian film बना रहे हैं. So बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि यार कैसा लगा कि आपकी पहली हिंदी फिल्म, you know, I was like यार हम तो काफी सालों से हीरो तो हैं ही. बहुत सारे एक्शन फिल्म्स कर चुके हैं और बहुत सारे फिल्म्स हमारे डब हो चुके हैं हिंदी में. So it was only certain industry people who didn't know. The heartland knows, the capital knows, the normal person in Mumbai knows, the people of South India know. We're all Indian. तो हम Indian films कब से बना रहे हैं? I think the only surprise is to certain people in the media. That's it. We actually didn't have any interaction, and you want to elaborate on that? Yeah, I think very early on it was uncle and aunties, uncle and amma's wish that we don't disturb the privacy of that situation because there's another family and a lot of other things. So out of respect to the people concerned, we made sure to take details but also keep it slightly different so that certain uncomfortable truths are not revealed. Advi, on your left, Advi, मुंबई आए हैं आप, you know, मुंबई का जो फेवरेट फूड माना जाता है वड़ा पाव, समोसा पाव, मिसल पाव, तो कुछ खाया आपने? आपका फेवरेट क्या है? अगर आप कुछ सही जी ने कुछ खिलाया आपको जो आपका फेवरेट? आप सही जी ने मुझे घर पे बुला के पिज्जा खिलाया, अलग बात है. मैंने कब घर पे बुला के पिज्जा खिलाया? वो हैदराबाद में खाया था. Oh, अच्छा. चलिए मुंबई में कुछ खाया आपने? Of course. I think, I mean, we've been coming here. ऐसी बात नहीं है. जो फर्स्ट फिल्म के बारे में जो मैं बात कर रहा था, that post production was done at Q Lab only. तो वड़ा पाव तो मैं रोज खा रहा था. So it's not really a surprise to us. And also the other thing is, we've been doing this for a while. जैसे ये 3 साल से बना रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम we suddenly came last month. We shot this film shot by shot, scene by scene, sentence by sentence in Hindi as an authentic Hindi film for the Hindi audience. We shot it shot by shot, scene by scene as an authentic Telugu film for the Telugu audience. और क्योंकि मेजर संदीप उनका मदर टंग मलयालम है, we're dubbing it into Malayalam out of respect more than commercial considerations. So all these efforts, it took a while, and that's kind of why nothing feels नया. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मुंबई पहली बार. Director actor happened on the set. But there was no changes or improvisations? Yeah, I mean that was always there. That's there with Sai, that's there with all other actors also. So that improvisation is always there. I never restrict any of my actors to do exactly what is on the script. And no conflict. What about you? With Sesh, I have conflicts every day, sir. Sesh, can you add to that? Sissy and I are honestly brothers, so we fight like brothers. So, it's a family thing. We've known each other for 10 years. He was the publicity in charge of my first film. So we go a long way back. I think the challenges were always there. When I write कि यार चलो hero sofa पे बैठा है, I think Seshi's vision when he decides what kind of a sofa that is, where it should happen, how it should happen, what the tempo and tension of the scene is, I think that changes the game. So
the conflict always ended with my gratitude, and I can say that honest to God. कौन सा एक मोमेंट था आपके लाइफ में and how long back it was? I have to tell you a funny moment and an emotional moment. Funny moment ये I grew up in the US. तो US में ये था, मेरे जितने भी देसी दोस्त थे वो उस वक्त तेलुगु लोग तो थे नहीं जहाँ पर मैं था, सिर्फ पंजाबी और गुजराती थे. They didn't speak English, I didn't speak Hindi. मैंने हिंदी सीखी, उन्होंने आज तक इंग्लिश में सीखी. And that's how I speak Hindi. रही बात as far as the attacks, I was in San Francisco. Like the whole world, I saw the attacks on TV, but I think my experience was a little unique क्योंकि जैसे ही मैंने मेजर संदीप, I saw his photograph, ऐसा लगा कि my older brother just passed away. मेरे बहुत सारे cousins हैं जो बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं. I look very similar to them. That's why Amma gave me permission to do this film. So this curiosity started कि यार कौन है जिन्होंने who's fought for us, what is he, why is he, how is he, who is he. फिर मैं उनका फैन बन गया धीरे धीरे over the years as articles came out about him, books came out about him. उनका एडमायरर बन गया और आज मैं खुश हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स हैं हैदराबाद, बैंगलोर, बहुत सारी जगह they teach Major Sandeep as a chapter in the textbook. Oh, lovely. I want to ask one question. आप जब रूना अगेन, जब आप ये फिल्म शूट कर रहे थे, शायद आप ताज में भी गए होंगे, अलग अलग जगह पर भी, वहां पर रियल लोकेशन जैसे कि आप बात कर रहे थे, तो वहां क्या किसी ने आकर आपका अप्रोच किया और क्या कोई रियल लाइफ जो सिचुएशन से गुजर चुका हो, किसी ने कोई रिएक्शन दिया? Yeah, I think the most memorable one was your 10-year anniversary 2018 with Uncle and Amma. We came to the 10-year memorial at the Taj, and I was allowed into the prayer line, like memorial है, जहाँ रतन टाटा जी खड़े थे, and they were honoring each of the victims of the Taj, and I got the special opportunity to be in part of that prayer service. So there was this immense interaction. So हम ये जानते हैं that there's a big responsibility, and we also knew कि when I was looking into Uncle and Auntie's eyes, I knew that it is so important कि लोगों को पता चले Major Sandeep's life is not just about the attacks. Major Sandeep's life is not just about कि वो शहीद कैसे हुए. It's about how he lived.